अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। अगर आप लोग का कुछ मीठा खाने या मीठा बनाने का दिल कर रहा है, यू कांट डिसाइड कि क्या बनाया जाए, तो यू आर एट वेरी राइट प्लेस, क्योंकि हम आज बना रहे हैं दी बेस्ट चॉकलेट फज ब्राउनीज। नाम से लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है, और जिसकी सबसे अच्छी बात है वो ये कि दिस इज़ वेरी क्विक एंड बियॉन्ड इजी रेसिपी, जो कि आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास मेल्टेड बटर। अगर आप अपने बटर को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं, विच इज़ द इजीएस्ट वे, तो मेक श्योर कि आपने इसको शॉर्ट इंटरवल्स में मेल्ट करना है। अगर आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट पे इकट्ठे मेल्ट कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा। सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मेल्टेड बटर आपने डाल दिया, उसमें आपने डालनी है कॉफ़ी। दिस इज़ एन ऑप्शनल पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन कॉफ़ी का फ्लेवर आपके ब्राउनीज में नहीं आएगा। दिस इज़ यूज जस्ट टू लिफ्ट अप द फ्लेवर ऑफ चॉकलेट। ये चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है, दैट्स वाई हम डाल रहे हैं। कॉफ़ी पाउडर, उसके बाद आपने डालनी है कैस्टर शुगर and brown sugar. And then mix it nicely. उसके बाद आप लोगों ने लेना है ऑल पर्पस फ्लावर, कोको पाउडर, एंड सॉल्ट। इन सबको आपने सिफ्ट कर लेना है। And then give it a nice whip. अब इसमें हमें डालने हैं एग्स। ये मैंने बीट किए हुए हैं, आपने बीट करके ही डालने हैं। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है सब कुछ। नाउ टाइम टू पुट इट इन द पैन। पैन को आपने रेडी रखना है, इसमें पार्चमेंट पेपर आपने बिछा लेना है, ठीक है। पार्चमेंट पेपर इज द मस्ट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो द ब्राउनी विल स्टिक टू द पैन, वो बाहर नहीं आएगी, एंड यू विल हैव टू ईट डायरेक्टली फ्रॉम द पैन, जो कि इतना बुरा आइडिया नहीं है। दैट विल बी फन टू, बट यू नीड टू डू दिस। ये देखिए, पार्चमेंट पेपर मैंने इसके नीचे बिछाया हुआ है, इसके ऊपर आपने अपना ब्राउनी बैटर डालना है। ये बैटर थोड़ा सा थिक ही है, आपने घबराना नहीं है बैटर को देख के, बिकॉज दीज आर फज ब्राउनीज, तो बैटर का टेक्सचर भी फजी सा ही होगा, थिक होगा। इसको आपने इस तरह से काउंटर पर टैप करना है
चुका है। इसके ऊपर अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी स्प्रिंकल करना चाहें, वॉलनट्स या फिर आलमंड्स या चॉकलेट चिप्स, कुछ भी वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर रहे हैं। And the pan is ready to go in the oven. बेक करना है 20 to 25 मिनट्स के लिए। Okay, so our brownies are ready. Wow! Look at this. और इतनी मजे की खुशबू आ रही है। अच्छा, मेरे ब्राउनीज गरम है। आपने गरम गरम को नहीं काटना, थोड़ा सा वेट करना है ठंडा होने का, ठीक है? इस तरह साइड से आपने नाइफ फेरनी है ताकि वो एजेस को छोड़ दे। इस तरह से आप इनकी बार्स काट लेंगे। Just look at this, gooey and fudgy. This is the texture we are looking for. Okay, so the brownies are ready. आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं इनकी। ये हमारे पास सिफ्टर में कोको पाउडर है। आपने प्याली को उल्टा रखना है और कोको पाउडर को सिफ्ट करना है इसके अपने बॉल के ऊपर और इसको आराम से उठा लेना है। उसके बाद आपने अपने ब्राउनी का पीस लेना है। Brownie topped with vanilla ice cream. Yummy!